नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो कॉस्मिक एक्सपेंशन के बारे में है, जो कि वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी की एक मेजर हाइपोथेसिस है। वेस्ट की कॉस्मोलॉजी के अनुसार बिग बैंग के द्वारा जनरेटेड एनर्जी से कॉस्मोस आज तक एक्सपेंड कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग एल्स in the cosmos is constantly expanding. Now in the latest hypothesis of the Western cosmology, जो कि पिछले 101 साल में अधिक डेवलप हुई है, उसके अनुसार rate of cosmic expansion is higher than estimated by gravitational constant and all other known laws of gravity. So instead of questioning their own laws of gravity, they have coined two new terms, dark matter and dark energy. Now these two terms have been introduced at very higher percentage to the tune of 75%, 80% to actually compensate for the excess energy or excess matter that they feel is present, which is leading to the cosmic expansion. लेकिन वो एक बात भूलते जा रहे हैं कि किसी भी गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर में अनगिनत स्टार्स होते हैं जिनमें लगातार फ्यूजन एक्टिविटी चलती रहती है, और हर एक सौर मंडल में भी एक केंद्र में सूर्य होता है, जो कि एक ऐसा तारा होता है जिसमें लगातार फ्यूजन एक्टिविटी होती है, विच इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड इट इज ऑल्सो द ग्रेविटेशनल बाइंडिंग फोर्स विच इज कीपिंग दैट पर्टिकुलर सोलर सिस्टम इंटैक्ट. सो यू वुड नोटिस दैट दिस स्टार इज सब्जेक्टेड टू वेरी heavy fusion activity which consumes a lot of mass of hydrogen nuclei and hydrogen, and it is also releasing not only the photon which is converted matter into energy but also hydrogen nuclei in the form of solar wind. We also know कि coronal mass ejections बहुत सारे होते हैं जिनसे sun का mass कम होता जाता है. Now you look at our own solar system. हमारे solar system में पृथ्वी से अगर आप केंद्र की ओर देखें, solar system के केंद्र में सूर्य है और बाहर के planets में gaseous joints like Jupiter and Saturn है. Jupiter का mass लगभग पृथ्वी से 300 गुना है और जुपिटर से 1000 गुना सन का मास है. It is estimated that the sun has consumed mass worth 95 Earth mass to fusion activity, release of energy, as well as mass ejections and throwing out of the solar wind into the solar system. Now, if you apply the reduced mass of the sun into the formula G, which is gravitational constant, multiplied by body of mass 1, multiplied by body of mass 2, divided by their distance square. So we will find that there is some correction in formula should arise. The cosmologists of the West, which are quite enthusiastic about their mathematics, their algorithms, and their mathematical derivations, they have not taken this particular aspect into consideration. This means that they are working in compartments, isolated compartments, in which one field is not telling another to what is happening, and they are not deploying corrections. Now, इस सब का हमारे जो native कॉस्मोलॉजी या नेटिव वैदिक ज्ञान है सनातन का, जो सनातन की एस्ट्रोलॉजी है, बेसिकली इट इज द एसेंस ऑफ कॉस्मोलॉजी which conveys to you as to how the solar system and the planetary systems and the cosmic bodies like star constellations are going to influence you, how you can change yourself, how you can modify your own self and you're living on the earth to have the positive influence of their energies. So which one amongst these is better and more precise? I leave it up to you. Thank you, friends.